Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying about is, are and am. देखिए is हमेशा is हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है, are हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आता है और I के साथ हमेशा क्या आता है, am आता है. So let's just begin with this chapter by giving the few sentences. It will be very easy for you to explain about is, are and am. The title of our chapter is, are and am. Work in pairs and make sentence with is, are and am. जैसे is. My Ritu is my best friend. ऐसा कह सकते हैं I am a girl. They are playing in the garden. You just read the following sentences. I am a farmer. मैं एक farmer हूँ. This is a lion. ये एक lion है. And they are friends. वो लोग क्या हैं? Friends हैं. In the above sentences जो is, are, am words हैं, ये verbs भी हैं, right? And they tell us the state of beings. देखिए is जो होती है वो main verb होती है. There is a fact file that am is used only with I. Am सिर्फ I के साथ यूज होता है. is used with he, she, it and singular noun के साथ यूज होता है. Are is used with we, you, they. ये सब क्या है? Plural noun के साथ, right? You have to study the following sentences and learn कि हम is, are, am को कहाँ यूज करेंगे. I am a student. मैं एक student हूँ. You are a player. आप एक player हैं. He is a good boy. वो एक बहुत अच्छा लड़का है. This is a cobbler. Cobbler we all know who mends our shoes. And mother is washing clothes. Mother क्लोथ्स को धो रही हैं. एंड आई एम राइटिंग अ पोएम. मैं एक पोएम लिख रही हूँ. अ क्विक शॉर्ट रिकैप. इज, आई एम, आर ये सब क्या है? वर्ब है. एम इज यूज्ड ओनली विद आई. आई के साथ हमेशा एम आएगा. इज यूज्ड विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ. एंड आर इज यूज्ड विद वी, यू, दे और ये सब क्या है? प्लूरल नाउन्स. Moving on to the exercise, first we'll be completing the correct answer. Am is used with only I. ठीक है. is किसके साथ यूज होता है? ही के साथ. एंड आर किसके साथ यूज होगा? वी, यू, दे इन सब के साथ, राइट? मूविंग ऑन टू द फिल इन द ब्लैंक्स. दिस इज द डॉग. ये एक डॉग है. द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट. आई एम प्लेइंग. आई के साथ हमेशा. चिल्ड्रन आर. चिल्ड्रन प्लूरल है. अंकुर एक लड़का है. अंकुर इज ड्राइविंग अ कार एंड दे आर माई फ्रेंड्स. वो क्या है? मेरे फ्रेंड्स हैं, राइट? So I hope you all understood this chapter. This chapter was quite easy. And one more homework for you, that you are going to write at least 10 sentences in your respective notebooks from whatever source you are reading, and make sure that you will underline all those is, are, am words that come in across the sentences. And please keep smiling and stay blessed. Thank you.